कल रात को I was sitting with my kids and I realized that how scared we are to fail. Seriously, सोच के देखना आप that how scared are we of failing, that what is actually going to happen, what if you don't get selected, what if my exam clear नहीं करती, what if I don't get the job, what if someone says no, and you actually feel like you are embarrassing yourself. You try something and you are terrible at it. ठीक है? Yeah, I mean, ठीक है, initially you will feel bad, but is that really you are afraid of? Or you are afraid of what failure will make you think about yourself? Or maybe you will think, maybe I'm not good enough, maybe everyone else is better than me. What will people think about me? What will if I never succeed? What if I think we have misunderstood the failure completely? Because sometimes you're not afraid of losing, sometimes you are afraid of what losing will say about you to the world, especially. Okay? Number one thing to remember, failure is not an event. Even if you did not get selected, you failed an exam, your business failed, okay? Someone rejected you, it all happened, okay? हो गया, event था, हो गया. But somewhere along the way, we say I failed और हम उसको ये बोलने लगते हैं that I am the failure. वो event हुआ हमारे साथ, वो ठीक है, but you start labeling yourself as I am a failure. And let me tell you, these are two completely different statements. And I want you to start separating them. Okay? So do not say that I'm bad at this. Say I'm not good at this yet. Okay? And you don't say that I always fail. You can say that this time it did not work. Okay? So छोटी सी बात है, but इसका जो impact on your brain है ना, it is too huge. क्यों? क्योंकि one actually closes the door कि बेकार हो, मत try करना next time. Next one actually leaves the door open that even if you're failed, you can try again. ठीक है? Second thing I want you to remember is you are more afraid of the judgment than the failure. And be honest, sometimes you don't fear failing, but you fear people seeing you fail. And that's why you don't want to apply. That's why you don't want to speak in class. And that's why you don't want to start. Because somebody will watch you. What if my friends will come to know? What if my father will come to know? What if my family will ask me? मेरे relatives पूछेंगे इसके बारे में. What if I post something and nobody likes, comments? ठीक है? What if you try and everyone sees that you were not good enough? बिल्कुल ही बेकार थे आप. So here's something you need to understand. People are thinking about you far less than you think they are thinking about. Because everybody is so busy managing their own life. And even if somebody laughs at your failure, let them, would you rather spend 5 minutes being embarrassed or you spend 5 years wondering कि काश मैंने कोशिश की होती? ये काश मत छोड़ना बच्चों जिंदगी में, ठीक है? Number third thing to remember is you have made success too important. And especially the social media, we are obsessed with getting the result. We are afraid of even starting because हमें ऐसा लगता है कि what if I don't succeed? What if I don't get recommended in SSB? Wow. But rather than that, आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान दो ना कि I will learn, I will improve. Result should come as a byproduct, later byproduct. So if your every attempt is about कि I have to control the result, you're going to be disappointed, okay? Number fourth thing about it is failure is information, okay? And अच्छा आप सोचो कि you try something and it did not work out, ठीक है? So now you know something you were not aware yesterday. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उसके लिए कुछ पढ़ा होगा, कुछ तैयारी की होगी, ठीक है? और हो सकता है कि आपको अपनी गलतियां ही पता चलेंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, आई वॉज नॉट रेडी, मे बी आई नीड टू लर्न अ डिफरेंट स्किल, ठीक है? और मे बी दिस होल पर्टिकुलर पाथ इज नॉट फॉर यू. सो बेसिकली यू हैव अनदर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू. बट जो इंसान ट्राई ही नहीं करेगा उसको ये सब कैसे पता चलेगा? हाउ विल ही हैव दैट इंफॉर्मेशन? हाउ विल शी नो कि फेलियर जरूरी है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, Number fifth is you need to experience small failures. ठीक है? So you don't need to wait for life to teach you through something devastating. मैं गई थी रिलायंस का इंटरव्यू देने और उसके दूसरे राउंड से निकल करके आ गई थी. और कहाँ गई थी? पंजाब से वडोदरा गई थी, गुजरात, तो क्या करना चाहिए था? उसके बाद मुझे बैठ जाना चाहिए था? नहीं, फिर दोबारा गई, एसएसबी से भी निकल के आ गई पहले राउंड से ठीक है, बट फिर क्या किया? बैठ गई क्या? नहीं,
फिर दोबारा गई, फिर एयरफोर्स में भी रिकमेंड हो गई एफकेट के थ्रू, और आर्मी में भी रिकमेंड हो गई. सो आई वॉन्ट यू टू नॉर्मलाइज फेलियर्स. ठीक है, यू आर ट्रेनिंग फॉर समथिंग, यू आर ट्रेनिंग योर नर्वस सिस्टम टू अंडरस्टैंड आई कैन फेल एंड दैट्स ओके. ठीक है, make this a powerful thing because one failure should stop feeling like an emergency. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक बच्चा उठा के बता दो आज जो कि बिल्कुल फेल ही ना हुआ हो कहीं भी जिंदगी में, नहीं होगा. Number 6 is stop trying to look perfect in everybody's eyes. It is damaging you all. समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को. You want to speak only when your English is perfect. You want to make videos only when you know exactly what you're doing. You want to go to gym when you have everything. कपड़े भी होंगे, जूते भी होंगे, सब कुछ होगा, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए. यू वांट टू अप्लाई जब आपकी सीवी बिल्कुल परफेक्ट है. यू वांट टू एंटर अ कॉम्पिटिशन कि मैं जीतूंगा तो ही जाऊंगा. इतना क्यों ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, ये ईगो इतना फंसा क्यों रखा है? बी अ बिगनर, इट्स ओके, लुक फुलिश, आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, मेक मिस्टेक्स, learn from that, and that is the price of becoming good at something, and you have to pay it. You all have to pay it. You like it, you don't like it, but you have to pay it. Number 7 thing I want you to remember is do not let one failure change your direction. ठीक है, so I failed in my maths subjects. I told you 0 number भी आए थे मेरे. ठीक है, I failed in my 10th boards in maths. I gave compartment examination. I failed in my first SSB. ठीक है, and Reliance वाला interview भी मैंने बताया. I failed in that interview as well. ठीक है, so it should not become a prediction about rest of your life. ठीक है, you can change the direction of your life the day you want to. ठीक है, so do not let that turn your life into a living hell. ठीक है, so हो गया. Focus on what is coming ahead. Learn to move on. It's very important. Okay, let the past failures does not define. You should not be defining your future. Okay. Number 8 to remember is sometimes you will do everything right and you will still lose. तो जब मैं अपनी पहली SSB देने गई थी, I was बिल्कुल 101% damn sure कि मैं तो select होकर ही आऊँगी. So I did prepare well, but I was out in the screening round only. So what? I was a good person. I gave my best. ठीक है, and still life did not rewarded me for my effort immediately. ठीक है, it was painful, but I had to become mature enough to accept that. ठीक है, so if you believe that if I will work out, I am guaranteed the result I want, ऐसा नहीं होगा. Life will break this belief for you. So work hard, but do not guarantee the success. ठीक है, what is important is what you become through that work matters a lot. Next thing is do not make failure a personal thing. ठीक है, you do not need to turn every rejection into they did not value me. Maybe they had someone better than me. Maybe circumstances did not work out. Maybe you made some mistakes. So do not try to protect your ego by blaming something outside. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो ability to improve है ना, वो खत्म होने लग जाती है when you blame everything else around you. ठीक है, so I want you to have the middle ground. Take responsibility without taking everything very personally. ठीक है, एक मकड़ी आई है हेलो बोलने. Okay, now I want you to stop asking why did this happen to me. ये सेम थॉट था मेरे अंदर जब मैं SSB से पहली बार निकली थी. ठीक है, and you have to start asking it what this is teaching me. ठीक है, and stop asking what people will think. Ask that what do I want. Stop asking that what if I fail. मान लो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और बोलते रहते हो what if I fail. Ask yourself what happens when I never try. ठीक है, so do not keep calculating the risk of failure. ठीक है, calculate the cost of inaction. जब आप चीजें करोगे ही नहीं, वो ज्यादा डरावना होना चाहिए. ठीक है, and your biggest failure may teach you so much more than what your success will teach you. ठीक है, so that one failure at the SSB center where I was screened out, it taught me so much कि मुझे, और वो जो मैंने सेकंड SSB से पहले इतना जो अपने ऊपर काम किया था ना, अपने आप को रूम में बंद करके, which I have told you in many videos that I locked myself in a room for 1.5 months, वो मैंने नहीं किया होता अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो गई होती. And it was important. ठीक है, but what I don't want is you should have a regret कि मैंने किया नहीं. ठीक है, so rather than regret, work.
ठीक है, एंड यू शुड लर्न हाउ टू स्टार्ट अगेन, एंड यहीं से रेजिलियंस आएगा। तो अगर एक एसएसबी में फेल हो गए तो रेजिलियंस लाओ, ये मत सोचो कि आई विल नेवर फेल, बट यू हैव टू थिंक दैट येस, व्हेन आई फेल आई नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई नो वेयर टू पिक अप फ्रॉम। Did not clear SSB, it's okay, prepare again. You did not get the job you appeared for in your college, मान लो, it's okay, apply again, some other company. You did not perform very well, it's okay. Made a mistake, it's okay, work on it, correct it. ठीक है, दिल लगा के ना अपने आप को बच्चों और परेशान नहीं करना है, it's not going to help you in any way, ठीक है। And I know most of us are not able to talk all this to our parents, and that is why you most probably you are watching this video also. बट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो जब ना OTA में वो 2.5 वाला पहला टेस्ट हुआ था तो मुझे लगा था अरे यार ये मैं क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कैसे हो पाएगा। बट वो धीरे धीरे एफर्ट डालते डालते ऑन दैट डे, टेस्ट वाले दिन, आई क्लियर इट बिल्कुल आराम से, ठीक है। और वहाँ पे कैटेगरीज बनाई होती है रनिंग टेस्ट की ना। फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सीलेंट, हु कम इन वेरी गुड टाइमिंग वाला, सेकेंड इज गुड, एंड थर्ड इज सैटिस्फैक्ट्री, ठीक है। सो आई केम इन गुड, मतलब आई डिड नॉट अपीयर इन एक्सीलेंट बट आई केम इन गुड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यू नो एफर्ट डालते जाओ, चलते जाओ, सोचना बंद करो व्हाट इफ आई फेल, एंड स्टार्ट थिंकिंग कि आई विल फेल, आई नो हाउ टू डील विद इट। आई वॉन्ट टू हैव दैट वॉरियर वाला एटीट्यूड, वो विक्टिम माइंडसेट लेके नहीं घूमते रहना है, ठीक है। सो थोड़ा सा रेजिलियंस लाना है लाइफ के लिए, ठीक है ना। सो डू नॉट थिंक कि वो रील है आपकी जिंदगी और एक ही बार में आप एफर्ट करोगे और एक ही बार में टोपी पहन के सल्यूट कर रहे होगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो स्टॉप थिंकिंग कि लाइफ विल ऑल्सो वर्क आउट एज अ रील, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट एज अ रील, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव वॉट यू वॉन्ट, ओके। फिर आप भी रील्स बना सकते हो बाद में। चलो, आई विल सी यू, बाय, जय हिंद।